And the BJP has declared its second list for the national capital. In fact, 29 names have been further released by BJP. Several prominent names figure in it, including Harish Khurana and Kapil Mishra. My colleague Maria Shakil has more details. Prominent faces in this list of 29 would certainly be Kapil Mishra, controversial figure certainly, but he has got a ticket from Karawal Nagar. And the BJP has chosen to, field a new face after dropping their current MLA Mohan Singh Bisht from that constituency of Karawal Nagar. Another interesting, candidate would be Harish Khurana, who's got a ticket from Moti Nagar. Mr. Khurana is the son of the only BJP chief minister. No, in fact, the party has had two chief ministers here. Madan Lal Khurana's son, late Madan Lal Khurana's son. So Harish Khurana, who's a party spokesperson, will be contesting from Moti Nagar. So he has been working tirelessly for the ticket as well. So interesting choice, but overall the party has to declare a far more number of candidates before they finally put their own strategy in place. It's an important election for the BJP here in Delhi, Tanima, because the party, remember, has been winning Lok Sabha elections. In 2014, it won all 7 seats. So did it do, in 2019, and also in 2024, it had a full strike rate. 7 on 7 went to the BJP. But when it comes to assembly elections, that's where the 30% floaters or the floating voters of Delhi play a role. And that's where the BJP is not able to really perhaps figure out as to how do they get the Delhiites who vote for the party in Lok Sabha also vote for them in assembly elections. Staying with news from Delhi, and the Aam Aadmi Party versus BJP face-off over alleged fake voters issue in Delhi escalates further, with Arvind Kejriwal now writing a fresh letter to the poll panel, alleging that union ministers and MPs are involved in adding fake voters to Delhi's electoral rolls. In fact, Kejriwal in his letter named BJP candidate Parvesh Verma, alleging that 33 applications were made from Parvesh Verma's residence. And if found guilty, he should be disqualified. Remember, Parvesh Verma is directly contesting against Kejriwal from the New Delhi constituency. The BJP has sharpened its attack against Aam Aadmi Party over Delhi excise policy case. BJP cited a CAG report on the case, which the party claims has revealed a loss of over 2,000 crore to the exchequer. Remember, several top leaders of the party, including former Delhi CM and AAP chief Arvind Kejriwal, have been arrested in this case. The AAP, on its part, has rubbished this figure and questioned the authenticity of these claims. जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली, जो एक शिक्षा मंत्री ने नहीं, शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने दी। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे डिटेल में, तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है, वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। CAG रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से CAG रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है CAG रिपोर्ट। भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं CAG रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं CAG रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? And just over 3 weeks to go for Delhi elections, and the war of words has intensified. Addressing a briefing today, AAP chief Arvind Kejriwal claimed that the BJP is likely to make Ramesh Biduri their party's chief ministerial face. He went on further to propose a debate between CM candidates of Aam Aadmi Party and the BJP. BJP was quick to dismiss the claim, with none less than Union Home Minister Amit Shah saying BJP does not need a CM face. ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के CM उम्मीदवार बनने के लिए।
मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। अरविंद केजरीवाल बार बार सीएम फेस का रनर होते हैं कि सीएम कौन, मेरा सीएम का चेहरा, मेरे सीएम के चेहरे का आगे कौन सा चेहरा। अरे आप तो सीएम हो ही नहीं सकते दिल्ली के। आपको कोर्ट ने मना कर दिया सीएम होने से। 12-12 लाख के सोने के कमोड लगाए थे। ऐसे चेहरे के खिलाफ हमें कोई चेहरे की जरूरत नहीं है। और हमारा चेहरा कमल का निशान है। हमारे कार्यकर्ता कमल के निशान को लेकर हर घर जा रहे हैं। We'll be heading into a short break at this point. More news and updates on the other side. Stay tuned. Welcome back. Now, 10 more people have been arrested in the case of a minor athlete's sexual assault case in Kerala, taking the total number of arrests to 15. The girl, who is now 18, had given a statement to the police that she had been sexually assaulted by 62 people and that she'd been exploited since the age of 13. FIR has been registered at Pathanamthitta in Kerala. The police added that they received evidence indicating that the girl was exploited by individuals, including her coaches, fellow athletes and classmates. Staying with news from the south, lashing out at Tamil Nadu Governor R.N. Ravi for walking out of the assembly without reading his customary speech at the beginning of the session. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin said the governor did so since he is unable to stomach Tamil Nadu's growth. M.K. Stalin said that the governor refused to accept the clarification given by the state that as per convention, Tamil anthem is played at the beginning of the governor's address and the national anthem is played towards the end. The governor's address became a flashpoint between Governor Ravi and the Tamil Nadu government, with the governor walking out of the assembly on January 6th, accusing the state government of disrespecting the constitution and national anthem. இந்த நீதிமன்றம் எத்தனையோ விசித்திரமான வழக்குகளை பார்த்திருக்கிறது. அதேபோல் இந்த சட்டமன்றமும் ஆளுநரை பொறுத்தவரை சில ஆண்டு காலமாக விசித்திரமான காட்சிகளை தான் காண்கிறது. மாண்புமிகு ஆளுநர் வருகிறார், உரையாற்ற வருகிறார், ஆனால் உரையாற்றாமலே போய்விடுகிறார். அதனால தான் ஆளுநரின் செயல்பாடுகளை நான் சிறுபிள்ளைத்தனமானது என்று சொன்னேன். தமிழ்நாடு வளர்ந்து வர்றதை அவரால் ஜீரணிக்க முடியலைங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன். In a shocking crime from Devas, Madhya Pradesh, a woman was murdered 10 months ago and her live-in partner hid her body in a fridge. The accused, arrested from Ujjain, would visit the house periodically to check the room. However, on Friday, the woman's decomposed body was discovered, and within hours, the police apprehended the accused who allegedly confessed to the crime. This is house number 128 in Vrindavan Dham Colony, Devas. On Friday morning, during cleaning, blood was seen dripping from a refrigerator in a locked room. The new tenant immediately informed the police. जुलाई से रह रहे थे यहाँ पर जी। सामने के 2 रूम उसने खाली नहीं करे थे। हम लोगों ने, मैंने काफ़ी बार उनको फ़ोन किया, बोले ठीक है मैं सामान ले जाऊँगा। लेकिन अभी मकान मालिक से बात होने, उन्होंने बोला ठीक है आप भाई आप बच्चों की पढ़ाई करना थी तो हमने सामने का रूम यूज़ कर लेंगे। उसके लिए जब हम रूम हमने खोला तब हमें मतलब संदेह हुआ। जैसे संदेह हुआ मैंने ये जानकारी BNP थाने में दी। फ्रिज चालू कंडीशन में था, तब हमने इसमें फ्रिज को बंद कर दिया था और आज सुबह जब मैं साफ सफाई करने गया तब स्मेल आई। The house was previously rented by Sanjay Patidar from Ujjain, who lived with his live-in partner Pinky Prajapat. Sanjay vacated the house in March 2024 but left some belongings promising to pay the rent. After months of non-payment, the landlord broke the lock, revealing the horrifying truth. उन्होंने बताया था कि मैं मंडी में काम करता हूँ, अनाज मंडी देवास में, और उनकी मैसेज का मुझे नहीं पता था, बट आजू बाजू से जो यहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम करते थे। उसने बोला कि ऐसे कभी उसके ससुर का हार्ट अटैक हो गया, क्या ऐसे बहाने, कभी उसका बोला कि चचा का लड़का मर गया, ऐसे उस 2-3 बहाने बनाया। During interrogation, Sanjay revealed he was already married. Pinky began pressurizing him to marry her, so he, along with an accomplice, killed her. The accomplice, already in custody in Rajasthan, stoked for another crime, will be brought for questioning.
पीड़िता का नाम हमें पता चला है पिंकी प्रजापति। इसके बारे में और भी जानकारी जितनी एक्यूज्ड के पास है उतनी जानकारी अभी तक कलेक्ट हो पाई है। कई चीज़ें राउंड ऑफ इंटेरोगेशन में और ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं। पड़ोसियों से जो पूछताछ की गई थी जिसमें तथ्य जैसे ही सामने आए कि बलवीर राजपूत से पहले यहाँ पर संजय पाटीदार किराएदार के रूप में रहते थे। संजय पाटीदार की जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास मिली तो एक पृथक से टीम एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया के निर्देशन में हमने उज्जैन रवाना की थी और वहाँ से अभियुक्त को हमने कस्टडी में लिया। Police have yet to trace Pinky's family. In Devas, with Arvind Choksey and Anurag Dwari for NDTV. Now, after Team India's disappointing test losses in Australia, they move on to a 5-match T20 series at home against England. India's squad was announced today and it has a few talking points, the foremost being Mohammad Shami's return to international cricket after a year-long injury hiatus. Secondly, the decision to name Akshar Patel as India's vice-captain to Surya Kumar Yadav is also likely to raise few eyebrows. Now, Pakistani star player Fakhar Zaman spoke to NDTV on the issue of India not travelling to Pakistan for the ICC Champions Trophy. Recalling his time in India during the World Cup, Zaman talks about the great reception his team had received. NDTV पे पाकिस्तान के सुपरस्टार फखर जमान हमारे साथ मौजूद है। फखर, सबसे पहले तो आपकी फिटनेस के बारे में बताइए। डेजर्ट वाइपर्स के साथ आप जो है वो अभी खेलने वाले हैं। ये आपके लिए पर्सनली भी कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे परफॉर्म करना, इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है और हम सारे चाहेंगे कि आप पाकिस्तान की टीम में आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर जगह पे हम लोग खेलते तो अपनी यही कोशिश होती है कि अपना बेस्ट दें और अच्छे से परफॉर्म करें और अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जितवाएं। तो मेरा भी यही गोल होगा। और रही फिटनेस की बात तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और 10 मैचेस में डोमेस्टिक T20 के भी खेल के आ रहा हूँ। यहाँ पे भी 10 मैचेस है शुरू के लीग के, तो अभी तक बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और कोशिश भी हो रही है कि स्कोर इम्प्रूव करूँ। आपके फिटनेस को लेके बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस होती रही, लेकिन हमने आज जो आपको देखा, जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि आप अपनी 100% फिटनेस के बिल्कुल करीब हैं। तो आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी फिटनेस को लेके अभी? देखिए, बातें तो बहुत होती है हर प्लेयर के बारे में और मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए, क्योंकि लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। तो जो लोग करते हैं वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया होता नहीं है कि प्लेयर के साथ क्या चल रहा है। अभी जैसे मेरी फिटनेस की बात हुई है तो मैं कभी भी जो है ना फिटनेस पे बाहर नहीं हुआ। मैं बीमारी की वजह से बाहर हुआ था और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे फैंस जो हैं वो इंडिया से आपको पसंद करते आए हैं और आपके जो आपने जिस तरह से वहाँ पे बेंगलुरु में जो इनिंग्स खेली थी वो आज तक याद करी जाती है। कोई ऐसा वहाँ पर का इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद है उस इनिंग्स के बारे में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक तो बेंगलुरु के मैच के एक दिन पहले हमारी जो ट्रेनिंग थी तो उसमें काफ़ी प्लेयर्स खेलने आए, प्रैक्टिस पे आए थे जिन्होंने हमें बॉलिंग भी की थी। तो उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते थे, तो वो देख के खुशी हुई। फिर जब हम लोग जब मैचेस खेल रहे थे तो क्राउड जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो इंडिया के साथ मैच हुआ था वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर पाकिस्तान में भी होगा, इवन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो तो इंडियन टीम को भी काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कि उसके अलावा जो हमारे मैच हुए तो हमें क्राउड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इवन अभी जब हम हाईलाइट्स भी देख रहे होते हैं उन मैचेस की तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें। इंडियन प्लेयर्स के साथ आपका किसी तरह का कॉन्टैक्ट, किसी तरह की कॉन्वर्सेशन जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे उस टाइम में ऐसा किसी एक प्लेयर्स के साथ आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, इंडिया में नहीं हुई, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे हुई थी। काफ़ी अच्छी बैठक रही थी। तो ऋषभ पंत था, शामी थे, काफ़ी प्लेयर्स के साथ और काफ़ी हंसी मजाक भी चला था। तो जब भी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग पहली ही मुलाकात क्यों ना हो तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा मलाल है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखिए, अगर आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये चीज़ें हमारी सोच से काफ़ी ऊपर है तो इस पे हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि अगर इंडियन टीम आती तो जितनी मेहमान नवाजी हमें मिली थी वहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा मिलती वहाँ पे।
International news now, and USA's week of extreme weather events draws to a close, though there isn't much respite for California. While 26 states battled snowstorms over the last week, LA authorities issued a new evacuation order as wildfires continue to rage and the rising smoke in the area is prompting a health emergency. This was a week of weather extremes in the United States. It began with dangerous cold across much of the country and record snowfall in some places. Then came deadly and historic wildfires in Southern California. And finally, multiple scientific agencies confirmed that 2024 was the hottest year ever recorded. At the beginning of the week, a winter storm dumped a year's worth of snow in one day. Millions of Americans were under sub-zero temperatures. Meanwhile, wildfires have devastated the Los Angeles area, killing at least 10 people and destroying entire neighborhoods. The LAPD will be enforcing a curfew in Los Angeles city areas where mandatory evacuations are still in place. The curfew will run from 6 p.m. to 6 a.m. Unless you are public safety personnel or other disaster workers, you have no reason to be at these locations, and if we see you in these areas, you will be subject to arrest. Climate change made the conditions worse, creating extra dry and hot conditions that turned last year's overgrown vegetation into extra kindling. What the experts are saying is even more of this is coming if we don't fight climate change created by humans burning fossil fuels. Because climate change created many of the conditions that made this week possible. Scientists say climate change is messing with the jet stream, the band of air currents that circle the globe. And a warming planet also has more energy that can warp and move polar air down to places it doesn't normally get to. That means more wonky winter events like the one earlier this week, and another continuing into the weekend. 2024's heat didn't just set a new record. It was also the first year in recorded history where the global average temperature was more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. World leaders have hoped to cap global warming to that amount to limit the worst effects of climate change. If this keeps up, scientists worry that more years like this will lead to more deaths, more destruction, and more wild weather. And with that, it's a wrap from my side. Keep watching NDTV.